Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 20th of September. The session will be quite interesting and a very beneficial student session for all the students who are preparing for competitive exams. The content we provide will be in a very refined way that will help you in your preparation. In this video, we will be discussing about the 9th edition of the SHS campaign that has been kicked off nationwide. Then we will be talking about a contract that has been signed with Croatia Technologies worth 66 crore rupees. Then we will be talking about Inspire Awards, and our country India hosted the second BIMSTEC Young Leaders Summit in Guwahati, Assam. All these things and many more will be discussed here, so stay tuned with us till the end. If you are new here students, do subscribe to us. We are one-stop solution for current affairs, and share the link of this video with your friends, cousins, relatives, neighbors, and let them know about this interesting platform. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. Let's start with national affairs students. So Prime Minister Narendra Modi has recently inaugurated the 16th edition of the CCC that was held in Kolkata, West Bengal. What is this CCC? It is your Combined Commanders Conference, right? This was held where? It was held at Vijay Durg, right? That is the headquarter of Eastern Command of the Indian Army. Where is this Vijay Durg? It is in Kolkata, West Bengal, right? This was the 16th edition of this Combined Commanders Conference, right? It was held from 15th to 17th of September. It was held under the theme Years of Reform, Transformation for the Future. Let me show you. This is the theme, that is Years of Reform, Transformation for the Future. What was the aim of this? On ongoing basically focus on the modernization and transformation of the Indian Armed Forces. We know that AI is coming into play. We know that now drones are coming into play. Robots are coming into play, and drones, these are also very lethal. They can be used for attacking also, not just for logistics or carrying goods from one location to other, or surveillance, or in agriculture sector. In defense sector also they can be used, right? So in order to improve the operational readiness for multi-domain warfare, this 16th edition of Combined Commanders Conference was held. Very important students, take a note of this. And it was held where? It was held at Vijay Durg, that is the headquarter of Eastern Command of Indian Army in Kolkata, West Bengal, right? During this only students, remember, the first announcement was regarding the merger of the education branches of the three armed forces, that is Indian Army, Indian Armed Forces, Indian Air Force, and Indian Navy. And with this, as three of the education forces or the education branches will be coming together, it will be establishing a unified Tri-Service Education Corps. Tri-Service Education Corps, right? This is the first announcement. Second announcement, the second major announcement was here for the establishment of 3 joint military stations. 3 joint military stations, correct? And it will be in India. This will enhance the efficiency and coordination in operation across the armed forces. So we are talking about the inauguration of Combined Commanders Conference. It was the 16th edition, inaugurated by Prime Minister Narendra Modi, where at Vijay Durg in Kolkata, West Bengal. And here the focus was, as you can see, merger of the education wing of these 3 forces and setting up of 3 new joint military stations. The previous edition, that is the 15th edition, was held in Bhopal, Madhya Pradesh in 2023. Then students, if I ask you, tell me, recently our country or Indian Railways, they have successfully tested Asia's longest freight train. Asia's longest freight train. What is the name of this train? Rudrastra. And how much kilometer long? It is 4.5 kilometer long. Then apart from this, remember, which edition of the UN Women She Leads To, this program was inaugurated in New Delhi. As I mentioned, She Leads To. So this is the second edition
of this UN Women's She Leads second program that was held in New Delhi. Then GAIL, Gas Authority of India Limited, they have partnered with which organization to explore the critical mineral resources? So with HCL, they have partnered to explore the critical mineral resources. Then who inaugurated the Metro Yellow Line in Bengaluru, Karnataka? It was inaugurated by Prime Minister Narendra Modi. Next remember recently, or next news is Ministry of Fisheries, Agriculture and Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, right? They have partnered with Food and Agriculture Organization. This is the arm of United Nations, right? This will strengthen the blue port infrastructure in India through TCP. First of all, what is this TCP? It is your technical cooperation program, right? And blue port, right? See, what this is basically about is blue ports are smart integrated fishing harbors where technology is taken into consideration, right? New technology is incorporated there. Focus is on sustainability. Focus is on how can we enhance the operational readiness of that particular port by incorporating these technologies, these new technologies into these ports, and it will become more efficient. The ports will become more efficient. They will become more sustainable, right? So for this reason, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, they have partnered with Food and Agriculture Organization. And what is the purpose? To develop blue port infrastructure in India. What are the pilot locations? Pilot means this initiative will be carried out at 3 locations on trial basis earlier. Which are these 3 locations? At Vanakabra in Diu, Jakhau in Gujarat and Karaikal in Puducherry. Project cost here is 369.8 crore rupees. If we talk about Food and Agriculture Organization, under this TCB framework, Food and Agriculture Organization will extend their technical support for planning, designing, management and capacity building. Right? Next students, if I ask you, DPIIT, they partnered with which platform to boost manufacturing startups through a innovation challenge by the name Zepto Nova? Here you can see Zepto. Zepto is the name of an online delivery platform. So DPIIT, they partnered with Zepto here for the Zepto Nova Innovation Challenge where the manufacturing startup boost will be provided. Correct students? Next, tell me, if I ask you which edition of Independence Day was celebrated this year. So India, our country, we celebrated 79th Independence Day on 15th of August. Right? Then OWNLY, Only app. This was launched by Rapido. Right? This is a food delivery platform with zero commission model. Then apart from this, name that AI powered platform that was launched to revolutionize the panchayat meetings with automated summarization. So what is the name of that AI platform, AI powered platform? It is Sabasar. It is Sabasar. This is the name of that platform. This is AI powered platform where the panchayat meetings will be summarized. Next is 9th edition of SHS campaign has kicked off nationwide. What is this SHS? HSS is your Swachhta Hi Seva, right? So that is the focus will be on cleanliness, how we can clean our neighboring areas, our surrounding, right? And if the areas are clean, then even the disease are less, the fleas will be less, the viruses, the bacteria will be spreading less, correct? And this was the 9th edition of this Swachhta Hi Seva campaign. This is a 15-day long campaign that was, or that will be culminating, or it will be ending on 2nd October. Why on 2nd October? Because on 2nd October is your Gandhi Jayanti, right? And this campaign aims to mobilize millions of citizens in mass drives for public cleanliness across the country. Correct? Take a note of this. What is the theme? Swachhotsav. Swachhotsav is the theme here, and this is launched by Ministry of Housing and Urban Affairs along with Ministry of Jal Shakti. It is a nationwide campaign. Right, students? Then apart from this, if I ask you which country became the 10th country in the world to eliminate sleeping sickness disease? Sleeping sickness disease. So it is Kenya. Right? And this data was released by World Health Organization recently. Right? Then apart from this, tell me recently, if I ask you who has been appointed as the Vodafone Idea Chief Executive Officer. So Abhijit Kishore has been appointed
as the Chief Executive Officer of Vodafone Idea. Then who has been appointed as the Governor of Nagaland? Governor of Nagaland. Who has been appointed here? Ajay Kumar Bhalla. Ajay Kumar Bhalla has been appointed here as the Governor of Nagaland. Appointed by whom, if this question is asked? Appointed by the President of India. Next is Indian Navy and Croatia Technologies. They have signed a contract worth 66 crore rupees for what? It is for building underwater remotely operated vehicles. See, we are talking about exploration of space, right? But right now also we can see that we have not explored the deep oceans, so we need to explore them. We need to have idea that what is there in those oceans, what kind of species are there. Right now, students, it is expected we have just explored 5% of the oceans and almost 95% of the ocean is unexplored, so we need to explore them, right? And for that we need underwater vehicles that can be operated remotely from the surface, right? So for this only, for this contract has been signed worth 66 crore rupees or $7.5 million for building underwater remotely operated vehicles, and it has been signed between India and Croatia. Very important, students. Then if I ask you, tell me recently, when do we observe World Sanskrit Day? World Sanskrit Day. When do we observe this? It is observed on 9th of August. World Lion Day. When do we observe this World Lion Day? 10th of August. Right? World Elephant Day, 12th of August. International Youth Day. International Youth Day on 12th of August. Right? Remember this. Moving on. Next is Inspire Awards. What are these Inspire Awards? And recently Muzaffarpur has topped the National Innovation Rankings with 7,403 student ideas. See, Muzaffar district, this Muzaffarpur district is where? It is in Bihar state, right? And it has topped the Inspire Awards Manak for year 2025. See this Inspire Award Manak. What does this Manak stands for? Millions Mind Augmented National Aspirational and Knowledge. Correct? Here 7,403 innovative student ideas were submitted, both from private as well as from public schools, right? That was the highest among the any state in India. Hence it is Muzaffarpur district of Bihar that has secured the top position here. The eligibility criteria for submitting here these ideas were from 6th class to 10th class, and financial assistance of 10,000 rupees will be granted here. Right, students, take a note of this. Then Inspire Award standard scheme here. See, Muzaffarpur of Bihar secured the top position, followed by Bangalore Urban Karnataka, then Bagalkot of Karnataka on the third position. If we talk about the district sharing same ranks, here you can see other top performers, here you can see in this award, right? And if we talk about this was launched as one of the flagship schemes of the Department of Science and Technology, and it is being implemented by the Department of Science and Technology in partnership with National Innovation Foundation, right? And here it is to tap 10 lakh original science and society based ideas from school children. And what is the eligibility? From 6th to 10th class. Then let's move on. Our country India hosted the second BIMSTEC Young Leaders Summit that was held in Guwahati, Assam. This event was inaugurated by the Governor of Assam, Lakshman Prasad Acharya ji. It was held from 9th to 11th of September, right? And who are the organizers here? Ministry of External Affairs, Bharat Scouts. I repeat, Ministry of External Affairs, Bharat Scouts and Guides. So these two organizations organized it. And who are the BIMSTEC countries here? Bangladesh, Bhutan, India, Myanmar, Nepal, Sri Lanka and Thailand. And another thing that you need to remember here is this is the second edition of the BIMSTEC Young Leaders Summit that was held in Guwahati, Assam. Right? Where was the first edition it was held? It was held in Feb 2025 and it was held in Gandhinagar, Gujarat. Right, students? Moving on. Apart from this, an application was launched, that is Sanchar Sathi app. Sanchar Sathi app. Why we are discussing it? Because this was launched in Hindi and it was launched by Jyotiraditya Scindia ji. Next is IBM. They have partnered with Bharat Jet to advance the
Indic language AI in India. I repeat, International Business Machines IBM, they partnered with Bharat Gen, that is an initiative led by the Department of Science and Technology to accelerate AI adoption in India through sovereign open source multimodal and logistic language models, right? And this will accelerate the AI adoption in India through sovereign Indic language models. Take a note of this, students, can be asked. And this partnership will integrate the multimodal of Bharat Gen with technologies of IBM, right? And we will be seeing that aim here is to develop a new benchmark for Indic languages, that is Indian languages, and explore more advanced architectures for the generative AI, right? Then apart from this, remember Google, they are setting up Asia's largest data center. Asia's largest data center, where? In Vishakhapatnam, Andhra Pradesh. And this will be set up with a cost of almost 51,000 crore rupees. Next is international affairs, students. India has re-elected to the CA and POC of Universal Postal Union for the period 2025 to 2028. I repeat, India has been re-elected to the Asia Pacific group of the Postal Operations Council and Council of Administration. So what is this? Council of Administration and POC is your Postal Operations Council. So India has been re-elected here to the Asia Pacific group of this Council of Administrations and Postal Operation Councils, right? And here has been approved for this Universal Postal Union for 4 years, that is from 2025 to 2028. This represents the Asia Pacific group, and it is because the India's growing influence in the global postal governance. This election was held during the 28th edition of the Universal Postal Congress, that was held where? It was held in Dubai. This is another important question, students. Can be asked that 28th edition of the Universal Postal Congress was held where? It was held in Dubai, UAE, from 8th to 19th of September, and this was held under a theme that is leading the change, creating the future. I repeat, what was the theme? Leading the change, creating the future, right? Take a note of this. Then apart from this, which port became the first port in India to produce green hydrogen? To produce green hydrogen, which is that port? First port in India, it is your VOC port. That port became the first port in India to produce green hydrogen, right? Then apart from this, tell me, if I ask you, first BIMSTEC traditional music festival. First BIMSTEC traditional music festival. So we can say this was the inaugural edition of this traditional BIMSTEC traditional musical festival. It was held where? It was held in New Delhi. Next is WMO report for 2024. Only third of the world river basins had water within normal range in 2024. I repeat, what is WMO? World Meteorological Organization. They have released the latest report, that is the state of the global water resources, and as per the report, only 1/3 of the global river basins had normal conditions in 2024. What does this say? That rest 60%, that is 2/3 of the global rivers, they recorded either excessive or deficient water flows for the 6th consecutive year. What does this mean is that because of global warming, the glaciers are melting, and because of this melting, the rivers are having more water. They have more water of them, or in other areas where there are no glaciers, the rivers are having less water. So because of this, what this report highlights, or it is indicating that the global warming is rising, and that because of the rise in temperatures, the glaciers that used to hold ice, right, water in the format of ice, it is melting now. Correct. Also, this report stated that the year 2024 was the hottest year in 175 operational records, with global surface temperatures reaching 1.55 degrees Celsius above the pre-industrial level. Also, if we talk about the glacier loss here, as per the report, year 2024 marked as the third consecutive year with the widespread glacial loss across all regions. Right, students? So, take a note of this report. Then, apart from this, if I ask you, students, recently, tell me, our country India, we surpassed which country to become the world's 5th largest aviation market? 5th largest aviation market. Name that country. Then, which country recently became 107th member of International Solar Alliance? It is Moldova.
Moldova became 107th member to join International Solar Alliance. Next is India and Norway. They hold inaugural maritime security, disarmament and non-proliferation dialogue in Oslo. I repeat, India and Norway, they held the inaugural maritime security, disarmament and non-proliferation dialogue that was held in Norway, Oslo, Norway. So location is Oslo, Norway. What was the focus here? In enhancing the maritime safety, right? To support economic growth, peace, global disarmament efforts in line with the international law. Correct? That means how we can secure our maritime areas, right? How we can preserve the economic activities there, right? And in coordination with other countries also, right? By promoting peace. Then moving on, next is banking and finance. PFRDA to introduce multiple scheme frameworks for NPS starting from 1st of October. What is PFRDA? This is the regulatory authority for pensions, or that is your pension fund regulatory and development authority, right? They have introduced MPS, or they have introduced multiple scheme framework for NPS. What is NPS? NPS is your national pension system, right? And this multiple scheme framework has been introduced for the non-government sector subscribers under the NPS. This major change will be coming into effect from 1st of October 2025. This MSF, that is multiple scheme framework, under this framework the NPS subscribers not employed with the government will be able to hold multiple schemes under a single permanent retirement account number across various central record keeping agencies. In earlier structure, a subscriber could operate only a single investment choice per tier and also be associated with only one CRA only, right? And here we will be seeing multiple variants will be now allowed to be held. Each scheme may have at least two variants, one moderate and one high risk, with equity allocation of up to 100%, that was earlier 75% in the higher risk category, right? And PFRDA, this is the regulatory body that promotes, develop and regulate the pension sector in India. If we talk about the chairman, who is the chairman of PFRDA, Shiva Subramaniam Ramanji is the chairman here, the headquarters of which is in New Delhi. Right, students? Next, also Ministry of Finance, they fixed the 30th September last date to switch to unified pension scheme from the NPS. Moving on. Next also remember we just discussed about this. Then moving on, RBI, they have authorized the DBS Bank in India as agency bank to collect the GST payments. So in order to collect the GST payments, who has been authorized as the agency bank by Reserve Bank of India? It is DBS Bank. Direct question will be asked here, right? Then also next, if I ask you, Supreme Court, they have stayed the provisions of the Waqaf Amendment Act requiring 5 years of Islam practice to continue a Waqaf. Also, Congress, they have launched nationwide protest against what is called the Draconian action in the National Herald case. Apart from this, the hawkers in Nagpur resisted the municipal corporation's anti-encroachment drives, right? These are the basic things that you need to remember. If we talk about the Republic Day parade, who was the chief guest here? Prabowo Subianto, who is the president of Indonesia, was the chief guest here. Where was the parade held? At the Kartavya Path. Next is astronomers discovers Arjuna asteroid 2025 PN7, that is the Earth's latest quasi-satellite. I repeat, astronomers, they have discovered a new Earth's quasi-satellite 2025 PN7, a near-Earth Arjuna class asteroid named after Mahabharata's Arjun. It orbits around the sun while staying close to Earth, and it is expected to remain in this quasi-satellite state for about 128 years. With this discovery, the number of quasi-satellites has reached to 7, and other are these satellites. Apart from this, who won the bronze medal at the 53 kg category at the World Wrestling Championship that was held in Zagreb? So Antim Pangal has won the bronze medal here, right? And at the same World Wrestling Championship, India only medal for this year came through Pangal's win, that is Antim Pangal's win, right? Next is sports. Mariam Fatima became the first women fight master from Bihar, as you can see here in the picture. Then if we talk about sports only, Dasara CM Cup, right? This Dasara CM Cup Sports Meet 2025 will be held from 22 to 25th of September in Mysuru, right? With more than 3,200 athletes across 26 sports will be participating here. Then next is International Equal Pay Day, students, observed on 18th of September, and this day is observed to raise awareness about the equality in the
pays of both men and women. This time, this was the 6th edition of this day that was observed. First time it was observed in 2020, right? So here you can see this. Then next, World Bamboo Day, observed on 18th of September. This day is observed basically to promote awareness of bamboo's environment, culture and economic significance. And this is the 17th observance of this World Bamboo Day. Right? First time observed in 2009 in Bangkok, Thailand. Then students, next is IPC, that is your Indian Pharmacopoeia Commission under the Ministry of Health and Family Welfare. They have inaugurated the 5th edition of the National Pharmacovigilance Week that was observed from 17 to 23rd of September at the Bharat Mandapam in New Delhi. Right? The aim of this is to make healthcare professionals, regulators, researchers and public more aware of the importance of reporting adverse drug reactions through simplified digital platforms. And there is a theme here that you all need to remember. Theme being your safety just a click away, report to PVPI, right? So take a note of it. Then next state news is Maharashtra government and Finland to modernize the Mumbai's Sessom dock. I repeat, Nitish Narayan Rane, the Minister of Ports Development of Maharashtra, they have announced the plan for the technology-driven modernization of Mumbai's historic Sessom dock in collaboration with the Finland country, right? So technology driven modernization will be done of this Sessom dock. Here the focus will be on modernizing it with efficient technologies and also in a sustainable manner, correct? Also, this Sessom dock, built in 1875, was Western India's first fully private wet dock. So that's all for the day, students. Now it's time for us to move to the revision part that will be quite beneficial for you all. S&P Global, they have released S&P Global Corporate Sustainability Assessment 2024 and the Carbon Disclosure Project, making Carbon Disclosure Project ranking in Feb 2025. Question asked is, which private sector bank in India was recognized as the highest rated bank in sustainability? It is Yes Bank. Next, in Feb, HDFC Bank Limited became the first domestic bank to trade 5 kilograms of gold on what? On Indian Bullion Exchange. Indian International Bullion Exchange. Next, Paytm partnered with which organization? They partnered with RBL Bank Limited to provide sound boxes and card machines to their merchants for easier and more efficient transactions. Next, in March, SEBI, they have permitted all NBFCs, including HDFC, including your housing finance companies, to invest in security receipts, that are your SRs, that are issued by the asset reconstruction companies. Next, mention the insurance company that recently launched child focused insurance product, that is Smart Future Star and Smart Platina Young Achiever, to provide financial security for children, education and future expenses. It is SBI Life Insurance Company Limited. This is the company that have launched the child focused insurance product, that is Smart Future Star and Smart Platina Young Achiever plan. Next, which private sector bank in India launched the Project Hawk, that is Hawaii Anubhavi Kalyan Kendra, serving those who have served, right? This is the name of the project. It was launched in March 25 to support the Indian Air Force pensioners, veterans and their families. Which is that bank? It is HDFC Bank Limited. Next, mention the health insurance company that launched the RISE health insurance plan in March, aimed at catering to the healthcare needs of the India's missing middle class. Right? So, which is that health insurance company? It is Niva Bupa Health Insurance Company Limited. Next is Bank of Baroda. They have introduced BOB Global Women NRE and NRO saving account designed exclusively for the women NRIs. Question is, what does the letter O stands for? NRO. That is your non-resident ordinary. Right? Take a note of this. Next, identify the public sector bank that collaborated with Indian Army to extend Rakshak salary package to Army personals, veterans and Agniveers under the Agnipath scheme. Question asked is, which is that public sector bank? It is Bank of India. BOI. Next, name the company that received $1.1 million in seed funding in March 2025 from Unleashed Capital Partners and CDM Capital to strengthen their technology and enhance debt recovery process. It is your CRED Resolution India Private Limited.
Next, as per SEBI's new regulations for SME initial public offerings that was announced in March 25, what is the maximum allowed percentage for the offer for sale portion of the total IPO size? So, what is the maximum allowed offer for sale portion here? What it will be? It will be 20%. Next, identify the private sector bank that collaborated with Indian Army's Directorate of Indian Army Veterans and Common Service Centers to expand Project Naman, that is aimed at supporting Army veterans and their families. Right? So, which is that private sector bank? It is HDFC Bank Limited. It will be in two phases from that started from September 23 and the second phase just now started in March 2025. Next, Kuhu Finance, backed by Westbridge Capital, they have secured the RBI license to function as a non-banking finance company, that is NBFC, that will enable it to offer student loans of up to 2 crore rupees. Next, name the institution that collaborated with Canara HSBC Life Insurance to offer credit life insurance solutions to home loan borrowers. It is GIC Housing Finance Limited. Next, in March, RBI and Dash jointly launched nationwide campaign to enhance financial security in India. It is National Center for Financial Education. Next, RBI, as per RBI's new framework for SROs, that is self-regulatory organizations in account aggregator ecosystem, what is the minimum net worth required within 1 year of the recognition of them as SRO? That is your 2 crore rupees. This is the minimum net worth requirement here. And this account aggregator system, this provides secure exchange of financial data between FIUs and FIPs, and it was initiated in 2016. Next, identify the company that became the first private sector reinsurer in India after receiving R2 license from IRDAI. Which is that company? It is ValueAtix Reinsurance Company Limited. This is the first private reinsurer in India. Next, Brisk Payment Exchange, that is BriskPay, they have received in principle approval from RBI in March to act as a payment aggregator for Dash transactions under Payment and Settlement Act of 2007. It is your payments aggregator for cross border, right? One is your payment aggregator, one is your payment aggregator cross border. This is within the international countries, right? You can transfer within different parts of the world. Payment aggregator is just for nation, right? Within the country, within the states, you can make transactions. Next, in March, RBI imposed a monetary penalty of JM Financial Products Limited for non-compliance with NBFC regulations. What was the monetary penalty imposed on GMFL? It was 3.1 lakh rupees. Next, identify the public sector bank that entered into a strategic co-lending partnership with Piramal House Capital and Housing Finance Limited in March to boost credit access for underserved rural and semi-urban regions in India. This will be your Punjab and Sindh Bank. Next, what is the revised timeline set by SEBI in March 25 for completing right issues effective from 7th of April 2025? It is 23 days. Next is in March, RBI signed a memorandum of understanding with Bank of Mauritius, right, to promote the use of local currencies for cross-border transactions. Correct? Take a note of this. This will enhance the bilateral trade between India and Mauritius. Next, identify the digital platform that collaborated with SBI Mutual Fund to launch Jan Nivesh, a 250 rupees SIP initiative that is aimed at promoting small ticket investments in India. This is your Paytm. Next, Paytm Money Limited, they received the certificate of registration from SEBI under which category? It was under research analyst category. Right option is option third. Next is identify the program launched by the Asian Development Bank on 17th of March to enhance local capital markets, boost entrepreneurship and support sustainable economic growth in the Pacific markets. So, which is that program? It is your Frontier Seed program. This is an initiative to provide funding and technical assistance to businesses with potential that is transformative. Next is name the digital platform that partnered with SEBI in March to help address the issue of unclaimed assets in the securities market. It is your DigiLocker that has partnered with SEBI here for this initiative.
Then next is what is the revised minimum investment threshold for zero coupon, zero principal instruments on social stock exchange set by SEBI in March to make it more affordable for small investors. So it is 1000 rupees minimum investment threshold for zero coupon, zero principal. Next, what is the which of the following individuals was not appointed as a member of the IAC, that is Insurance Advisory Committee by IRDAI? So Sanjeev Sanyal was not appointed here. Next, name the mobile application launched by Bank of Baroda for corporate customers using Baroda Cash Management Service. It is Baroda M DigiNext. Next is how much penalty that the RBI imposed on IDBI Bank in March for violating the rules under Foreign Exchange Management Act of 1999. This is 36.3 lakh rupees. Right, so on IDBI it is 36.3 lakh rupees and on Citibank it is 30.28 lakh rupees. Next, students, is our homework question. Today's homework section will be a little bit different. Today you will have to give 5 current affairs for topics I am giving here. You have to give me 5 current affairs for sports. These have to be for the last 6 months. Right? First is related to sports. Second, defense. Third, related to national affairs. It can be any national news of important, right? Then fourth question, you have to give me indexes, right? What are the rank of India in various indexes that were recently released? Fifth question, you have to give me international news, right? And sixth is for the appointments. So a total of, I want from all of you, right, all these things into 5, that comes out to be 30 important one-liners from all the students who are watching this video. I want to see 30 important one-liners, right? As you will be commenting below these 30 one-liners, say for example 100 students commented below these 3 important one-liners, 30 important liners, so that will be a database of 3000 important one-liner current affairs for the past 6 months. That will be a very beneficial for all the students. So it will be a collaborative effort, students. I want all the students to comment below, and all the students who are watching this video should comment at least 30 important current affairs, more as per your choice, but at least 30 comments, 30 important one-liners for the past 6 months for these topics I want from all the students. Like, let's help each other. Stay tuned with us for more such content, students, on daily basis. Thank you and have a nice day. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे. तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 20 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं 9वें एडिशन ऑफ एसएचएस कैंपेन की, जो कि नेशन वाइड किक ऑफ किया गया. देन हम एक कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे वर्थ 66 करोड़ रुपीस क्रोशिया के साथ मिलकर ये साइन किया गया. देन हम बात करेंगे मुजफ्फरपुर, इन्होंने टॉप किया भी रिसेंटली नेशनल इनोवेशन रैंकिंग में विद 7430 स्टूडेंट आइडियाज के साथ. एंड सेकंड बिम्स्टेक यंग लीडर्स समिट की बात करेंगे, जो कि गुवाहाटी असम में हुई. ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे. एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा. एंड नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब कर लेना एंड शेयर कर दो इस वीडियो को. स्टार्ट करते हैं नेशनल अफेयर्स से स्टूडेंट्स. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने इनॉग्रेट किया 16वां CCC, जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल में हुआ. CCC क्या है? कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, राइट. ये कहां पर हुआ था? विजय दुर्ग में, जो कि कमांड सेंटर है ऑफ ईस्टर्न कमांड, या फिर हेडक्वार्टर है ईस्टर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी का, कोलकाता वेस्ट बंगाल में. ये 16वां एडिशन था आपका CCC का, जो कि 15 से लेकर 17 सितंबर तक हुआ. ईयर्स ऑफ रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द फ्यूचर यहाँ पे इसकी थीम रहेगी. एम क्या है? इंडियन आर्म फोर्सेस को यहाँ पे मॉडर्नाइज करने का, नई टेक्नोलॉजीज को लाने का, इक्विपमेंट्स को अपग्रेड करने का, न्यू टेक्नोलॉजी से, नए आइडियाज से, नए यूज केसेस से, नए मॉडर्न वेपन्स वॉरफेयर्स के लिए फ्यूचर रेडी हम हो सकें, राइट. इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही यहाँ पे तीनों फोर्सेस के द्वारा ये क्या था? कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस. कहां पर हुआ? विजय दुर्ग में, जो कि ईस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर है कोलकाता वेस्ट बंगाल में, राइट. फिर यहीं पे याद रखेंगे कुछ की अनाउंसमेंट जो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, आपको आइडिया होना चाहिए. सबसे पहला अनाउंसमेंट था मर्जर ऑफ द एजुकेशन विंग्स ऑफ दीज 3 फोर्सेस. एंड दूसरा है सेटिंग अप ऑफ 3 न्यू जॉइंट मिलिट्री स्टेशंस. ये जॉइंट मिलिट्री स्टेशंस इस्टेब्लिश किए जाएंगे इंडिया में, जिससे इंडिया में एफिशिएंसी बढ़ेगी एंड जो ऑपरेशंस हैं ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस इंडिया में, उनका कोऑर्डिनेशन स्ट्रेंथन होता हुआ हमें दिखेगा. ये 16वां एडिशन था. तो अगर 15th एडिशन पूछा जाए, ये कहां पर हुआ था? भोपाल में हुआ था, इन मध्य प्रदेश. और कब? 2023 में.
ठीक है। फिर इसी के अलावा अभी वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हुई, ज़ग्रेब में हुई। 53 केजी कैटेगरी में एक लौता मेडल इंडिया के लिए लाने वाले अमित पंघाल थे। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। सो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इन्होंने पार्टनर किया यूएन के आर्म फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ ताकि ब्लू पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया जा सके इंडिया में थ्रू टीसीपी। टीसीपी क्या है? टेक्नोलॉजी कॉपरेशन प्रोग्राम। मतलब जो हमारे पोर्ट्स हैं उनको हम ग्रीन ब्लू पोर्ट्स की तरफ, ब्लू पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ले जा सकें, इनोवेशन के ऊपर काम किया जा सके, टेक्नोलॉजीज को लाया जा सके, इन पोर्ट्स पे एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी की मदद से हम बढ़ा सकें एंड सस्टेनेबिलिटी की तरफ इन पोर्ट्स को ले जाया जा सके, राइट। तो फोकस क्या रहेगा? इंटीग्रेटेड फिशिंग हार्बर्स बनाना, ब्लू पोर्ट्स को स्मार्ट बनाना, टेक्नोलॉजी को कंबाइन करना, एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए सस्टेनेबिलिटी के ऊपर भी ध्यान रखना है यहां पर, राइट। तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के द्वारा मिलकर ये इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था। यहीं पे याद रखेंगे 3 लोकेशंस में, राइट, ये पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। ये है वो 3 लोकेशन, 369.8 CR करोड़ की मदद से इनको लॉन्च किया जाएगा। एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है यहाँ पे? टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है फॉर प्लानिंग, डिजाइनिंग, मैनेजमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। अभी हमें बहुत फ्लड्स देखने को मिली, सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमें पंजाब में देखने को मिला, राइट। फिर एक डाटा बताता है कि नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से 2024-25 का जो फाइनेंशियल ईयर रहा, 3000 से भी ज़्यादा लाइव्स हमें जाते हुए दिखी, हाईएस्ट इन 11 ईयर्स। फिर इसी के अलावा अगर हम देखें तो अभी रिसेंटली सेंटर ने डिस्क्लोज किया दैट ऑलमोस्ट 14.24 लाख हेक्टेयर्स ऑफ क्रॉपलैंड एंड ओवर 3.64 लाख हाउसेज ये डैमेज हो गए बिकॉज ऑफ नेचुरल डिजास्टर, राइट। फिर इसी के अलावा अभी गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने अप्रूव किया है रिस्टोरेशन ऑफ 5 डैम्स को अंडर ड्रिप इनिशिएटिव। ड्रिप क्या है? डैम रिहेबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, 510 करोड़ की मदद से ये किया जाएगा, राइट। फिर इसी के अलावा यात्री सेवा दिवस, यात्री सेवा दिवस ये अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया था इंडियन सिविल एविएशन मिनिस्टर जी के द्वारा, ताकि जो एयर ट्रैवल एक्सपीरियंस है पैसेंजर्स का उसको और बेटर किया जा सके, ठीक है। फिर अभी बिजनौर उत्तर प्रदेश में मलन रिवर का जो बैंक था वो कोलैप्स कर गया फ्लडिंग की वजह से, राइट। देन आंध्र प्रदेश ये एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं जिससे जो जीएसटी रिफॉर्म्स बेनिफिट हैं वो रिमोट एरियाज तक भी पहुंच सके, उसके बारे में अवेयरनेस रिमोट एरियाज तक भी पहुंच सके। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं 9वें एडिशन ऑफ एसएचएस कैंपेन की बात करेंगे जो कि किक ऑफ किया गया नेशन वाइड। एचएसएस क्या है? स्वच्छता ही सेवा। 15 दिन का ये कैंपेन रहेगा, 2 अक्टूबर को ये खत्म हो जाएगा जिस दिन गांधी जयंती है। एंड यहाँ पे एम क्या है? सफाई के ऊपर ध्यान देना, राइट। हम कैसे स्वच्छता के ऊपर जा सकते हैं, स्वच्छ हमारा अपना देश बना सकते हैं, क्लीनलीनेस प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा देश साफ रहेगा, रोड साफ रहेंगे, साफ सफाई रहेगी तो बीमारियां भी कम होगी, पॉल्यूशन भी कम होगा, राइट। एंड बैक्टीरियाज, वायरसेस ये कम फैलेंगे जिससे कम बीमारियां होंगी, करेक्ट। तो इन चीजों के ऊपर ध्यान देने की बात की गई। इस बार इसका 9वां एडिशन हमने ऑब्जर्व किया। कब से? 15 दिन का कैंपेन है, 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक। स्वच्छोत्सव यहां पे थीम रहेगी इसकी, ठीक है, मार्क करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स इंडियन नेवी एंड क्रोशिया, राइट। इनकी या फिर हम बोले हम इंडिया एंड क्रोशिया, और इंडिया से इंडियन नेवी एंड क्रोशिया के द्वारा एक अग्रीमेंट साइन किया गया। 66 करोड़ रुपीस का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा ताकि अंडर वाटर रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स को बनाया जा सके। देखो इससे होगा क्या? पहली चीज हम जानते हैं, हम स्पेस के ऊपर एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं, स्पेस में जाने की बात करते हैं, लेकिन हमने अभी तक हमारे ओशंस को, वाटर बॉडीज को ही एक्सप्लोर नहीं किया। बोला जाता है सिर्फ 5% हम एक्सप्लोर कर पाए हैं, रेस्ट 95% हम ओशंस को एक्सप्लोर कर ही नहीं पाए हैं, राइट। तो अगर हमें ओशंस की डेप्थ में जाना है, उनको ऑपरेट करना है, तो एक चीज है कि हमें अंडर वाटर रिमोटेड ऑपरेटिंग व्हीकल्स चाहिए जो कि हम ऊपर से ही उनको ऑपरेट कर सकें, नीचे वो काम करें, राइट। तो एक तो चीज हो गया कि हमें रिसर्च में इसका बहुत बड़ा काम होगा। दूसरा, ये सर्वेलेंस में भी बहुत ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कराएगा इंडिया को, राइट। इंडियन नेवी की स्ट्रेंथ होती बढ़ती हुई दिखेगी। तो इंडियन नेवी एंड क्रोशिया के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ। 66 करोड़ रुपीस मतलब $7.5 मिलियन का ये कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलेगा, राइट स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है इंस्पायर अवार्ड्स अभी देखने को मिले, जहां पर मुजफ्फरपुर ने टॉप किया इन द नेशनल इनोवेशन रैंकिंग विद 7403 स्टूडेंट आइडियाज। देखो 6ठी से लेकर 10वीं क्लास तक के बच्चों के लिए इनिशिएटिव था, ये कैंपेन था, ये अवार्ड्स का इवेंट था जहां पर वो अपने इनोवेटिव आइडियाज को सबमिट कर सकते हैं। एंड हमने देखा मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट जो कि बिहार में आती है, राइट, यहाँ से सबसे ज्यादा हमें आइडियाज का जनरेशन देखने को मिला थ्रू स्टूडेंट्स। एंड यहाँ पे 10,000 तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जाएगा बच्चों को ताकि वो अपना इनोवेटिव आइडिया को फर्दर कैरी कर सकें। ये आप टॉप परफॉर्मर देख सकते हैं, मुजफ्फरपुर
बिहार ने यहाँ पे टॉप किया विद 7403। देन बेंगलुरु अर्बन कर्नाटका सेकंड पोजीशन पे, देन बालकोट कर्नाटका थर्ड पोजीशन पे। फिर इसी के अलावा 47th वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन अपॉइंट किए गए हैं? संजय वत्स्यन। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं मणप्पुरम फाइनेंस के? वो है दीपक रेड्डी। देन फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कौन बनी? सोनाली मिश्रा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली वीमेन डायरेक्टर जनरल बनी है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की। इसी के अलावा जैगुआर लैंड रोवर, इनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन अपॉइंट किए गए हैं? पीबी बालाजी। ठीक है, फिर इसी के अलावा अगर हम बात करें नए चेयरमैन ऑफ BARC इंडिया के चेयरमैन कौन बने हैं? गौरव बैनर्जी। जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड, इनके CIO कौन अपॉइंट किए गए हैं? ऋषि कोहली। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स हम इंडिया ने होस्ट किया सेकंड बिम्स्टेक योगा लीडर समिट। कहां पर? गुवाहाटी असम में ये होस्ट किया गया। इसको मार्क करेंगे स्टूडेंट्स, पूछा जा सकता है कि सेकंड बिम्स्टेक यंग लीडर समिट कहां पर हुआ था? गुवाहाटी असम में हुआ था। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराया गया था गवर्नर ऑफ असम लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी के द्वारा 9 से लेकर 11 सितंबर तक। ठीक है, गुवाहाटी असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर यहीं पे अगर मैं आपसे पूछूं बिम्स्टेक में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका। ये सेकेंड एडिशन था, राइट। फिर इसी के अलावा अगर क्वेश्चन आ जाए, जरा बताओ किसने टॉप किया स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड में फॉर द 8th कॉन्सिक्यूटिव टाइम? तो इंदौर ने यहां पे टॉप किया। किसने टॉप किया? इंदौर ने, राइट। देन अभी रिलायंस रिटेल ने किनको एक्वायर किया था? एक ब्रांड को एक्वायर किया था जिसका नाम था कैलविनेटर। ठीक, फिर एक और चीज याद रखेंगे, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत लॉन्च किया गया था सेंटर के द्वारा। कहां पर? वाराणसी में ये कैंपेन को लॉन्च किया गया था। फिर इसी के अलावा अभी DPIIT ने किस ऑटोमोबाइल कंपनी के साथ पार्टनर किया टेक ड्रिवन स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए? वो था मारुति सुजुकी, राइट। देन USA ने विड्रॉ कर लिया है, कहां से? यूनेस्को से। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी उन्होंने जनवरी में एग्जिट कर लिया था, राइट। और यूनेस्को से 2026 के एंड तक ये एग्जिट ले लेंगे। मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं IBM, इन्होंने पार्टनर किया भारत जैन के साथ टू एडवांस इंडिक लैंग्वेज AI इन इंडिया, मतलब इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट करने के लिए, जहां पे मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हम बना सकें इंडियन लैंग्वेजेस को ध्यान में रखते हुए, राइट। ये पार्टनरशिप की गई IBM एंड भारत जैन के द्वारा। करेक्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन है, मार्क करके चलेंगे। फिर इसी के अलावा अगर क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट्स, जरा बताओ अभी कौन अपॉइंट किए गए हैं मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गिफ्ट सिटी के, जो कि गांधीनगर में है और 3 साल के लिए इनको यहां पे अपॉइंट किया गया है? संजय कौल, राइट। देन एक्सिस बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं? नीरज गंभीर। NFRA नेशनल फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरपर्सन कौन अपॉइंट किए गए हैं? नितिन गुप्ता। अटल इनोवेशन मिशन के मिशन डायरेक्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं? दीपक बागला, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे स्टूडेंट्स। इंडिया को रिलेक्ट किया गया टू CA एंड POC ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन 4 साल के लिए 2025 से 2028 के लिए, राइट। ये CA और POC क्या है? CA है काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड POC है आपका पोस्टल ऑपरेशंस काउंसिल, राइट। तो एशिया पैसिफिक ग्रुप के पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल एंड काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में इंडिया को रिलेक्ट कर लिया गया है 4 साल के लिए 2025 से 2028 के लिए। रीजन क्या है? इंडिया का जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है ग्लोबल पोस्टल गवर्नेंस में, उसको ध्यान में रखते हुए ये जो डिसीजन है 28वें यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस के दौरान लिया गया, जो कि दुबई में हुआ था, UAE में, राइट। 8 से लेके 19 सितंबर तक। एंड इसकी एक थीम थी जिसपे ये कॉन्फ्रेंस कांग्रेस हुआ था, यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस, वो थी लीडिंग द चेंज क्रिएटिंग द फ्यूचर, राइट स्टूडेंट्स, मार्क करेंगे। फिर इसी के अलावा पेटीएम मनी के MD एंड CEO कौन अपॉइंट किए गए हैं? वो हैं संदीप भारद्वाज, ठीक है। फिर किनको कलिंगा रत्ना से सम्मानित किया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम के द्वारा? तो धर्मेंद्र प्रधान एंड सरला सम्मान जी, राइट। इनको सम्मानित किया गया यहां पे, ठीक। आई रिपीट, आई करेक्ट माई सेल्फ, कलिंगा रत्ना अवार्ड से धर्मेंद्र प्रधान जी को एंड सरला सम्मान इस अवार्ड से विजया नायक जी को, राइट। तो ये दोनों याद रखेंगे, कलिंगा रत्ना एंड सरला सम्मान। नेक्स्ट आ जाते हैं WMO वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इनकी अभी एक रिपोर्ट रिलीज की गई जो कि है स्टेट ऑफ द ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट। एंड अकॉर्डिंग टू देम जो 1/3 मतलब
1/3 33% ऑफ द वर्ल्ड रिवर बेसिन है, राइट। इनमें जो वाटर है वो नॉर्मल रेत से अलग रहा, राइट, क्योंकि जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो पिघलने से जो वाटर है वो कहाँ पर आ रहा है, इन रिवर्स में आ रहा है, तो इनका जो लेवल था वो बढ़ता हुआ दिखा, और कई रिवर्स तो ऐसी थी वो सूखी पड़ी रही, राइट। एंड ये फर्दर बताता है कि हमारे जो 2024 का टेम्परेचर था ना वो हॉटेस्ट ईयर था, अबव द 1.55 डिग्री सेल्सियस अबव था ये प्री इंडस्ट्रियल लेवल से। एंड इवन ग्लेशियल जो लॉस है, मतलब जो ये पहाड़ होते हैं या फिर जो ग्लेशियर्स होते हैं जहाँ पे पानी बर्फ के तौर पे स्टोर होता है, वहाँ पर भी ज़्यादा आपका ग्लेशियर का लॉस होता हुआ दिखा, मतलब टेम्परेचर अर्थ का बढ़ता हुआ दिखा, मतलब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती हुई दिखी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है इंडिया एंड नॉर्वे ने होल्ड किया इनॉग्रल मैरीटाइम सिक्योरिटी डिसआर्ममेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन डायलॉग। ये कहाँ पर हुआ, ऑस्लो नॉर्वे में हमें देखने को मिला। इसका एम क्या था कि मैरीटाइम सेफ्टी को हमें बढ़ाना है, इकोनॉमिक ग्रोथ को ध्यान में रखना है, पीस को ध्यान में रखना है, एंड जो इंटरनेशनल लॉ है उसको मेंटेन करते हुए हम अपने एरिया में जो हमारा वाटर बॉडीज में ओशंस में जो एरिया आता है वहाँ पे हम पीसफुली मैरीटाइम में हम अपनी फिशिंग कर सकें एंड इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकें, एंड दूसरी कंट्रीज के साथ हमें पीस भी मेंटेन करना है ताकि कोई नोक झोंक ना हो, राइट। फिर बात करते हैं 32वें सिम्बैक्स एक्सरसाइज की। ये सिम्बैक्स एक्सरसाइज कहां पर हुई, सिंगापुर में हुई, इंडियन नेवी के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया गया। देन सेकेंड एडिशन ऑफ द वीमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप कौन होस्ट कर रहा है, हैदराबाद तेलंगाना होस्ट कर रहा है, 3 अगस्त से 10 अगस्त तक ये हुआ था। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर बैंकिंग एंड फाइनेंस पे स्टूडेंट्स। देन नेक्स्ट आते हैं बैंकिंग फाइनेंस पे। पीएफआरडीए इन्होंने इंट्रोड्यूस किया मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क फॉर एनपीएस स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर। देखो पहले क्या होता था, जो एनपीएस के सब्सक्राइबर होते थे ना वो किसी एक पर्टिकुलर स्कीम में ही एनरोल हो पाते थे, राइट। तो वो अब क्या कर दिया गया है, अंडर दिस न्यू फ्रेमवर्क जो एनपीएस के सब्सक्राइबर हैं एंड दे आर नॉट एम्प्लॉयड विद द गवर्नमेंट, अब वो मल्टीपल स्कीम्स को होल्ड कर पाएंगे अंडर परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, जो कि पीआरएन नंबर होता है एनपीएस के अंदर, राइट, अक्रॉस वेरियस सीआरएस जो कि सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज होती है। पहले के स्ट्रक्चर में एक सब्सक्राइबर सिर्फ एक ही इन्वेस्टमेंट चॉइस पे पर टीयर यहां पे चूज कर पाता था विद ओनली 1 सीआरए, राइट। इससे होगा क्या, अब जो वो अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो डाइवर्सिफाई कर सकेंगे, राइट। एंड हर स्कीम में 2 वेरिएंट्स होंगे, एक मॉडरेट एंड एक हाई रिस्क की, जहां पे जो इक्विटी एलोकेशन अलाउड होगा 100% अलाउड होगा, जो कि पहले 75% होता था इन द हाई रिस्क कैटेगरी। एंड पीएफआरडीए के द्वारा ये अलाउ किया गया है। एनपीएस, यूपीएस, ओपीएस, ये सारी चीज क्या होती है, पेंशन प्रोवाइड कराने के लिए किसी भी इंडिविजुअल को, राइट। ओपीएस यूपीएस वो किस लिए थी, वो सरकारी एम्प्लॉयज के लिए थी। एनपीएस कोई भी एनरोल कर सकता है इसमें। पीएफआरडीए ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि आपकी पेंशन सेक्टर को रेगुलेट करती है इंडिया में। इनके चेयरमैन कौन है, शिव सुब्रमण्यम रमन जी, ठीक है, मार्क करेंगे। इसी के अलावा अभी जैसे मैंने आपको बताया 30 सितंबर लास्ट डेट है फॉर स्विचिंग टू यूपीएस। जो ओपीएस में है, ओल्ड पेंशन, जो एनपीएस में है, अगर उन्हें यूपीएस में आना है, राइट, तो उसके लिए जो लास्ट डेट क्या फिक्स की गई है, 30 सितंबर, ठीक है। एंड ये यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा 1 अप्रैल 2025 को इंट्रोड्यूस की गई थी एज एन ऑप्शन अंडर द एनपीएस फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट है आरबीआई ने ऑथराइज किया डीबीएस बैंक को एज ए एजेंसी बैंक। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये वो बैंक अब जीएसटी कलेक्ट कर सकेगा, राइट। तो वो कौन सा एजेंसी बैंक अपॉइंट किया गया है आरबीआई के द्वारा जीएसटी कलेक्शन के लिए, जीएसटी पेमेंट कलेक्ट करने के लिए, वो है डीबीएस बैंक इंडिया। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स। एस्ट्रोनॉमर्स ने डिस्कवर किया अर्जुना एस्ट्रॉइड, जिसका नाम है 2025 या 2025 PN7। ये अर्थ का लेटेस्ट क्वासी सैटेलाइट है। 128 साल तक ये रहने वाला है अर्थ का सैटेलाइट, एंड अर्थ के चारों तरफ ये ऑर्बिट, सन के ऑर्बिट करता है एंड काफी क्लोज है अर्थ के। एंड ये आपका कासी सैटेलाइट डिस्कवर किया गया, मतलब सैटेलाइट तो है लेकिन नहीं भी है, क्वासी सैटेलाइट, राइट। मून एक परमानेंट सैटेलाइट है, राइट। एंड ये 7 सैटेलाइट्स में से आता है, अब ये 7 हो गई हैं, एंड बाकी ये सैटेलाइट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर एंड्रे रसल, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से। फिर इसके अलावा आने वाले 3 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप फाइनल्स कौन होस्ट करेगा, इंग्लैंड होस्ट करेगा, ये आईसीसी के द्वारा डिक्लेयर किया गया। आपका होमवर्क है, मुझे बताओ अभी रिसेंटली इंडियन मेंस क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर कौन कर रहा है। ड्रीम 11 तो छोड़ गया, तो अब नई कंपनी कौन आई है जो इनको स्पॉन्सर कर रहा है, वो आप होमवर्क में बताओ। फिर आपसे पूछूं मैं 2025 का फाइड चेस वर्ल्ड कप कब से कब तक होगा, 30 अक्टूबर से लेके 27 नवंबर तक होगा, एंड कौन इसको होस्ट कर रहा है, हमारा इंडिया इसको होस्ट कर रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स फिर स्पोर्ट्स के ऊपर। मैरियम फतिमा, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, ये पहली वीमेन फाइड मास्टर बन गई, कहां से, बिहार से। नेक्स्ट
नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स इंटरनेशनल इक्वल पे डे 18 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। बोथ वीमेन एंड मैन की जो पे होनी चाहिए सेम पोस्ट के लिए इक्वल होनी चाहिए, इसके बारे में अवेयरनेस प्रमोट करने के लिए, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। छठा एडिशन इस बार हमने इसका ऑब्जर्व किया, पहली बार 2020 में इसको ऑब्जर्व किया गया था। यहीं पर अगर मैं बात करूँ नेशनल फ्लैग डे कब ऑब्जर्व करते हैं, 22 जुलाई को। फिर नेशनल मैंगो डे 22 जुलाई को, इंटरनेशनल मून डे 20 जुलाई को, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स वर्ल्ड बैम्बू डे। वर्ल्ड बैम्बू डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं, 18 सितंबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है बैम्बू के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए एंड बैम्बू का जो इन्वायरमेंटल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है एंड इस बार हमने इसका 17वां एडिशन ऑब्जर्व किया। फिर इसी के अलावा स्टूडेंट्स अगर पूछूं आपसे, संचार साथी ऐप हिंदी में लॉन्च की गई किसके द्वारा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा। देन चौथा एडिशन ऑफ आदि कर्मयोगी रीजनल ऐप स्टैब्लिश की गई या होस्ट किया गया किसके द्वारा, उड़ीसा के द्वारा होस्ट किया गया। देन 7 PM मित्रा पार्क्स को स्टैब्लिश किया जाएगा अक्रॉस इंडिया, टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड ये PM मित्रा पार्क्स रहेंगे, राइट। देन अभी रिसेंटली अगर पूछा जाए, बुद्धा का सेक्रेड पिपरावा रेलिक्स ये रिटर्न किया जाएगा इंडिया को आफ्टर 127 साल। फिर इसी के अलावा पहला बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल कहाँ होगा, न्यू दिल्ली में ये हमें होगा, राइट। फिर इसी के अलावा अभी रिसेंटली याद रखेंगे, अभी ऑस्ट्रेलिया ने बैन कर दिया कि जो भी इंडिविजुअल बच्चे 16 साल से नीचे के हैं उनको यूट्यूब से बैन कर दिया गया है, राइट। फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो 107वां कंट्री कौन सा बन गया है जिन्होंने इनको ज्वाइन किया, वो है मोल्डोवा। इंडिया ये 5वां लार्जेस्ट एविएशन मार्केट बन गया है 2024 में एज पर द डाटा रिलीज बाय IATA। नेक्स्ट फिर आ जाते हैं IPC, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। इन्होंने अभी इनॉग्रेट किया 5वां नेशनल फार्माको विजिलेंस वीक को, जो कि 17 सितंबर से 23 सितंबर तक ऑब्जर्व किया जाएगा भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। इसका एम क्या है, क्यों ऑब्जर्व किया जाता है, बेसिकली ये इवेंट ये ऑब्जर्व किया जाता है ताकि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, रेगुलेटर्स होते हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं, राइट, वो सब एक जगह आ सकें एंड जो इंपॉर्टेंस है रिपोर्टिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की, मतलब जो ड्रग से आपकी रिएक्शन हो जाती है बॉडीज में उनको रिपोर्ट करना, राइट। अगर आप ड्रग्स ज्यादा मात्रा में कोई दवाई ले रहे हैं उसका क्या नेगेटिव रिएक्शन हो सकता है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराना, कोई गलत मेडिसिन ले ली उसका क्या रिएक्शन हो सकता है वो उसके बारे में अवेयरनेस कराना, ताकि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू ये यहां पर मेन एम रहने वाला है, राइट। तो इसलिए हुई थी ये इवेंट, ये वीक ऑब्जर्व किया जाता है 17 से 23 सितंबर तक। फिर आ जाते हैं स्टूडेंट्स महाराष्ट्र के न्यूज़ के ऊपर। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फिनलैंड के साथ पार्टनर किया ताकि मुंबई का ससोन डॉक इसको मॉडर्नाइज किया जा सके। ये ससोन डॉक इंडिया का पहला फुल्ली प्राइवेट वेट डॉक था, 1875 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था एंड यहाँ पे क्या करा जा रहा है, बेसिकली इसको और बेटर किया जा रहा है, राइट। इसको टेक्नोलॉजी की मदद से मॉडर्नाइज करा जा रहा है, नई इनिशिएटिव्स, नई इनोवेशंस को यहाँ पे लाया जा रहा है, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम किया जा रहा है, इस पोर्ट की एफिशिएंसी बढ़ाने का काम किया जा रहा है ताकि नई टेक्नोलॉजी की मदद से हम इसको एक सस्टेनेबल हार्बर एंड एफिशिएंट पोर्ट बना सके। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर, जिससे आपकी लर्निंग और स्ट्रांग होती हुई दिखेगी। उस बैंक का नाम बताओ जिन्होंने रिसेंटली एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जो कि है मर्चेंट लॉयल्टी कैशबैक प्रोग्राम। इसमें क्या है, आपके लोगों जो भी यहाँ पे इस ऐप को यूज़ करेगा जो कि है BOB मर्चेंट एप्लीकेशन, उनको कैशबैक मिलेगा इन टर्म्स ऑफ CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो किसके द्वारा, BOB किससे हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा। ऐसे भी आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बायलेटरल स्वैप अग्रीमेंट अभी साइन किया गया। कितने अमाउंट का ये बायलेटरल स्वैप अग्रीमेंट था, $75 बिलियन का था, जो कि RBI इंडिया एंड बैंक ऑफ जापान के बीच में हो ताकि फाइनेंशियल कॉपरेशन को बढ़ावा दिया जा सके। इसके बाद आ जाते हैं सेबी, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया नया फ्रेमवर्क फॉर स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड टू एड्रेस द गैप्स बिटवीन म्यूचुअल फंड्स एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करेंगे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस डेट से लेके किस डेट तक यहाँ पर आपको ये नया फ्रेमवर्क लागू हो जाएगा। तो किस डेट से लागू होने वाला है, ये 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द न्यू टर्म डिपॉजिट, जो कि लॉन्च किया गया फेडरल बैंक के द्वारा टू प्रोवाइड स्टेबल इनकम फॉर अ पीरियड ऑफ 5 to 20 ईयर्स ऑफ रेजिडेंट कस्टमर्स। तो ये है एन्युइटी डिपॉजिट, ठीक है, ये एक नया टर्म डिपॉजिट है। इसके बाद आ जाते हैं S&P ग्लोबल, इन्होंने रिलीज किया S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट 2024 को एंड द कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट रैंकिंग इन फेब 2025। पूछा जा रहा है किस प्राइवेट सेक्टर बैंक ने इंडिया को रिकॉग्नाइज किया गया एज द हाईएस्ट रेटेड बैंक इन सस्टेनेबिलिटी। तो वो है येस बैंक को हाईएस्ट रेटेड बैंक इन सस्टेनेबिलिटी घोषित किया गया है। एंड अभी येस बैंक में किस कंपनी ने अपना स्टेक सेल किया है एंड किसने बाय किया है, ये आप होमवर्क सेक्शन आपका नीचे मुझे बताओ। नेक्स्ट,
HDFC बैंक लिमिटेड, इन्होंने ये वो पहला डोमेस्टिक बैंक बन गया जिन्होंने ट्रेड किया 5 किलोग्राम्स ऑफ गोल्ड। कहाँ पर? तो इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज पे इन्होंने यहाँ पे ट्रेड किया, जो कि जिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में है। नेक्स्ट, पेटीएम ने किनके साथ पार्टनर किया ताकि साउंड बॉक्सेस एंड कार्ड मशीन्स को प्रोवाइड किया जा सके टू द मर्चेंट्स फॉर ईजियर एंड मोर एफिशिएंट ट्रांजैक्शंस। तो वो आरबीएल बैंक के साथ इन्होंने यहाँ पे पार्टनर किया है। नेक्स्ट, सेबी ने अभी परमिट किया एनबीएफसीज को इंक्लूडिंग एचएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, कि वो इन्वेस्ट कर सकें किसमें? सिक्योरिटी रिसिप्ट्स में, जो कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के द्वारा इशू की जाएंगी। नेक्स्ट, उस इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने लॉन्च किया चाइल्ड फोकस्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट, जो कि है स्मार्ट फ्यूचर स्टार एंड स्मार्ट प्लेटिना यंग अचीवर टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर चिल्ड्रन, एजुकेशन एंड फ्यूचर एक्सपेंसेस। तो किसके द्वारा, कौन सी है वो इंश्योरेंस कंपनी? वो है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट, किस प्राइवेट सेक्टर बैंक ने इंडिया में लॉन्च किया प्रोजेक्ट हॉक, जो कि है हवाई अनुभवी कल्याण केंद्र सर्विंग दोज हु सर्व्ड, राइट? तो बेसिकली इंडियन एयरफोर्स पेंशनर्स, वेटर्न्स एंड उनकी फैमिलीज को हेल्प करने के लिए, सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए ये लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं उस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने लॉन्च किया राइज हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, जिसका एम रहेगा कि हेल्थ केयर नीड्स जो इंडिया की है ऑफ द मिसिंग मिडिल क्लास, उनको यहाँ पे कैटर किया जा सके। तो ये है नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया बीओबी ग्लोबल एनआरई एंड एनआरओ सेविंग अकाउंट को। पूछा जा रहा है कि जो ये एनआरओ में ओ है ये किस लिए स्टैंड होता है? एनआरओ होता है नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी एंड एनआरई होता है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल। तो यहाँ पे ओ पूछा गया है तो ऑर्डिनरी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पब्लिक सेक्टर बैंक जिन्होंने कोलैबोरेट किया है इंडियन आर्मी के साथ ताकि रक्षक सैलरी पैकेजेस को यहाँ पे एक्सटेंड किया जा सके टू आर्मी पर्सनल्स, वेटरन्स एंड अग्निवीर्स अंडर अग्निपथ स्कीम के अंडर। तो कौन सा वो पब्लिक सेक्टर बैंक रहेगा? वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट, नेम द कंपनी जिन्होंने $1.1 मिलियन रिसीव किए इन सीड फंडिंग मार्च में फ्रॉम अनलीश कैपिटल पार्टनर्स एंड सीडीएम कैपिटल टू स्ट्रेंथन देयर टेक्नोलॉजी एंड एनहेंस डेट रिकवरी प्रोसेसेस। तो वो है क्रेड रेजोल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं एज पर सेबीज न्यू रेगुलेशंस फॉर एसएमई इंडिया इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स अनाउंस्ड इन मार्च, मैक्सिमम अलाउड परसेंटेज फॉर ऑफर फॉर सेल पोर्शन ऑफ द टोटल आईपीओ साइज कितना रहेगा? तो 20% यहाँ पे अलाउड है, मैक्सिमम अलाउड परसेंटेज फॉर द ऑफर फॉर सेल। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पब्लिक सेक्टर बैंक जिन्होंने कोलैबोरेट किया इंडियन आर्मी के डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स एंड कॉमन सर्विस सेंटर्स अकेडमी के साथ ताकि प्रोजेक्ट नमन को एक्सपेंड किया जा सके, जिसका एम है कि वेटरन्स, आर्मी वेटरन्स एंड उनकी फैमिलीज को यहाँ पे बेटर सर्विसेज प्रोवाइड किया जा सके, उनको सपोर्ट किया जा सके। तो ये है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट, कुहू फाइनेंस, ये एक एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म रहेगा। इन्होंने ये बैक्ड है बाय वेस्ट ब्रिज कैपिटल के एंड इन्होंने सिक्योर किया आरबीआई का लाइसेंस टू फंक्शन एज अ एनबीएफसी। जो ये इससे क्या होगा? एनबीएफसी से ये स्टूडेंट लोन्स ऑफर कर सकेंगे अप टू 2 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट, नेम द इंस्टीट्यूशन जिन्होंने कोलैबोरेट किया कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस के साथ टू ऑफर क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशंस टू द होम लोन बोरोवर्स। तो कौन सा है वो इंस्टीट्यूशन? वो है जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। नेक्स्ट, अभी आरबीआई ने एंड किन्होंने जॉइंटली लॉन्च किया नेशन वाइड कैंपेन टू एनहेंस फाइनेंशियल लिटरेसी इन इंडिया, वो है नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। नेक्स्ट, एज पर आरबीआई's न्यू फ्रेमवर्क फॉर सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस एसआरओज इन द अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम, मिनिमम नेटवर्थ क्या होनी चाहिए विद इन 1 ईयर ऑफ द रिकॉग्निशन ऑफ देम एज एसआरओ? तो मिनिमम नेटवर्थ 2 करोड़ रुपीज होनी चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपनी जो कि फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर री इंश्योरर बन गई है इन इंडिया आफ्टर रिसीविंग R2 लाइसेंस फ्रॉम IRDAI। तो वो है वैल्यू एटेक्स री इंश्योरेंस लिमिटेड। नेक्स्ट, ब्रिस्क पे एक्सचेंज जो कि है ब्रिस्क पे, इन्होंने रिसीव किया इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई इन मार्च टू एक्ट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर। किसके लिए? फॉर क्रॉस बॉर्डर, राइट? एक होता है सिर्फ पेमेंट एग्रीगेटर, एक होता है पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर। इससे क्या होता है, आप बिटवीन कंट्रीज भी पेमेंट को सेंड एंड रिसीव कर पाएंगे इनके थ्रू, एंड सिर्फ पेमेंट एग्रीगेटर से विद इन इंडिया ही आप यही अचीवमेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं मार्च में आरबीआई ने इम्पोज करा मॉनेटरी पेनल्टी ऑन जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड फॉर नॉन कंप्लायंस विद एनबीएफसी रेगुलेशंस। व्हाट इज द मॉनेटरी पेनल्टी इम्पोज्ड ऑन जेएमएफएल? तो 3.1 लाख रुपीस की मॉनेटरी पेनल्टी यहाँ पे इम्पोज की गई है।
Next, identify the public sector bank that entered into a strategic co-lending partnership with Piramal Capital and Housing Finance Limited in March ताकि credit access को boost मिल सके for underserved rural and semi-urban regions in India. तो वो है पंजाब and Sindh Bank. Next, what is the revised timeline set by SEBI in March for completing right issues effective from 7th of April? तो 23 दिन की यहाँ पे टाइमलाइन सेट की गई है. नेक्स्ट, अभी आरबीआई ने साइन किया एक एमओयू किसके साथ? टू प्रमोट द यूज ऑफ लोकल करेंसी फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन, जिससे बायलेटरल ट्रेड यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखेगा. तो इंडिया एंड मॉरिशस के बीच में ये साइन की गई है, इंडिया के आरबीआई एंड मॉरिशस के बैंक ऑफ मॉरिशस के बीच में, ताकि दोनों कंट्रीज की लोकल कंट्रीज में यहाँ पे ट्रेड करा जा सके. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द डिजिटल प्लेटफॉर्म जिन्होंने कोलैबोरेट किया सेबी एसबीआई म्यूचुअल फंड के साथ टू लॉन्च जन निवेश, जो कि एक 250 रुपीज़ की एसआईपी इनिशिएटिव है जिसका एम रहेगा स्मॉल टिकट इन्वेस्टमेंट को इंडिया में प्रमोट किया जा सके. तो कौन सा है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म? वो है पेटीएम. नेक्स्ट, अभी पेटीएम मनी इन्होंने रिसीव किया सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सेबी अंडर विच कैटेगरी? तो रिसर्च एनालिस्ट कैटेगरी के अंडर इन्होंने यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रिसीव किया पेटीएम मनी ने फ्रॉम सेबी. नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द प्रोग्राम प्रोग्राम जो कि लॉन्च किया गया एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा 17 मार्च को टू एनहांस लोकल कैपिटल मार्केट्स, बूस्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड सपोर्ट सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ इन द पैसिफिक मार्केट्स. तो क्या नाम रहेगा उस प्रोग्राम का, ये पूछा गया आपसे. तो वो प्रोग्राम है फ्रंटियर सीड. नेक्स्ट, नेम द डिजिटल प्लेटफॉर्म जिन्होंने पार्टनर किया सेबी के साथ इन मार्च टू हेल्प एड्रेस द इशू ऑफ अनक्लेम्ड एसेट्स इन द सिक्योरिटीज मार्केट. तो वो है डिजिलॉकर. नेक्स्ट, व्हाट इज द रिवाइज्ड मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड फॉर जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट ऑन द सोशल स्टॉक एक्सचेंज सेट बाय सेबी इन मार्च टू मेक इट मोर अफोर्डेबल फॉर स्मॉल इन्वेस्टर्स? तो 1000 रुपीज़ रहेगा. Next, which of the following individuals was not appointed as the member of Insurance Advisory Committee by IRDAI? इनमें से संजीव सन्याल को यहाँ पे अपॉइंट नहीं किया गया था. Next, students, is our homework question. Today's homework section will be a little bit different. Today, you will have to give 5 current affairs for topics I am giving here. You have to give me 5 current affairs for sports. These have to be for the last 6 months. Right? First is related to sports, second defense, third related to national affairs, it can be any national news of important, right? Then fourth question, you have to give me indexes, right? What are the rank of India in various indexes that were recently released? Fifth question, you have to give me international news, right? And sixth is for the appointments. So a total of, I want from all of you, right, all these things into 5, that comes out to be 30 important one-liners from all the students who are watching this video. I want to see 30 important one-liners, right? As you will be commenting below these 30 one-liners, say for example 100 students commented below these 3 important one-liners, 30 important liners, so that will be a database of 3000 important one-liner current affairs for the past 6 months. That will be a very beneficial for all the students. So it will be a collaborative effort, students. I want all the students to comment below, and all the students who are watching this video should comment at least 30 important current affairs, more as per your choice, but at least 30 comments, 30 important one-liners for the past 6 months for these topics I want from all the students. Like, let's help each other. Stay tuned with us for more such content, students, on daily basis. Thank you and have a nice day.